कई बार मिले हैं は数回 और に हर お会い बार する機会が मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति 日印関係 उनकी पॉजिटिविटी のポジティブな और प्रतिबद्धता को およびコミットメントを महसूस किया है 感じます और इसलिए だからこそ आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का 相互協力 मोमेंटम बनाए रखने के लिए 維持するのにも बहुत उपयोगी रहेगी 役立つものと思います फ्रेंड्स 皆様 आज की हमारी मुलाकात 我々の会合は एक और कारण से भी विशेष है の理由から इस साल 特別な会合と भारत されます今年 G20 की अध्यक्षता कर रहा है 議長国であり और जापान は G7 की 議長国で और इसलिए 従って अपनी अपनी प्राथमिकताओं 優先事項 और हितों पर साथ मिलकर काम करने का 力合わせ यह उत्तम अवसर है 最高の機会 आज मैंने 今日 प्रधानमंत्री किशिदा को 岸田総理に भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया しました हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ 週の14 ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है 優先事項をしっかり वसुधैव कुटुंबकम バスデーブ・クトゥンブ को मानने वाली संस्कृति 家族である सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है かはみんな और इसलिए 前進すること हमने ये पहल ली है なのでこのような फ्रेंड्स 取り組みをとっています भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप パートナーシップは हमारे साझा 民主主義 लोकतांत्रिक मूल्य および और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर 法の支配 रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है ています इस साझेदारी को मजबूत बनाना を हमारे दोनों देशों के लिए तो 両国に महत्वपूर्ण है ही であること इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 太平洋地域に शांति समृद्धि और स्थिरता को भी 安定を बढ़ावा मिलता है にもつながりま आज हमारी बातचीत में हमने す会合には द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की 共有しました हमने रक्षा उपकरण 防衛装備や और टेक्नोलॉजी सहयोग 協力 व्यापार 貿易 स्वास्थ्य 保険 और डिजिटल साझेदारी पर デジタルパートナーシップ विचारों का आदान प्रदान किया しました सेमीकंडक्टर 半導体や और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में で重要 विश्वस्त सप्लाई चेन्स के महत्व पर भी サプライチェーン हमारे बीच についても सार्थक चर्चा हुई 議論ができました पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5年間 5 ट्रिलियन येन つまり यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के 量を जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था यह संतोष का विषय है 達成に कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स फूड प्रोसेसिंग एमएसएमई टेक्सटाइल्स मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इसके लिए हमने कनेक्टिंग हिमालयाज विथ माउंट फूजी नाम का थीम चुना है फ्रेंड्स आज प्रधानमंत्री किशिदा ने मुझे मई महीने में हिरोशिमा से मैं होने वाली G7 लीडर समिट के लिए निमंत्रण दिया इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं इसके कुछ महीनों बाद सितंबर में G20 लीडर समिट के लिए मुझे प्रधानमंत्री किशिदा का फिर से भारत में स्वागत करने का अवसर मिलेगा हमारी बातचीत और संपर्कों का यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहे और भारत जापान संबंध
लगातार नई ऊंचाइयों को छूते रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now may I ありが call とうご upon ざいま Honorable した。 Prime そ Minister れ of で Japan は、 to deliver 岸 his 田総 remarks. 理お願いいたします。はい。昨年3月以来、1年ぶりにインドを訪問させていただきました。そしてここハイデラバードハウスで再びモディ首相とじっくり議論ができましたことを大変嬉しく思っております。いつも温かく迎えてくださるモディ首相、そしてインド国民の皆様方に心から感謝を申し上げたいと思います。本年、日本が G7 の議長国を、そしてインドが G20 の議長国を務めています。世界が歴史的な As the world is standing at history's turning point, fraught with difficulties, what role Japan and India should play? I wish to discuss this fully with Prime Minister Modi. With this thought in my mind, I came to India. At the meeting, I have explained that at the G7 Hiroshima summit this May, from the two viewpoints of upholding international order based on the rule of law and strengthening partnership with the international community going beyond G7, including the countries from what is called Global South, challenges faced by international community will be taken up. Having conveyed this, I reaffirmed with Prime Minister Modi our commitment to strongly uphold the international order based on the rule of law. Also, Prime Minister Modi shared his thoughts on various themes in the international community, especially in areas of development finance, food security, and climate energy. Views concurred to have close cooperation between G7 and G20. We will cooperate toward the successful G7 Hiroshima Summit and G20 New Delhi Summit. In this context, I formally invited Prime Minister Modi to G7 Hiroshima Summit, and on the spot, my invitation was immediately accepted. Regarding the strengthening of our bilateral relations with India, who is our special strategic global partner, wide-ranging discussion also took place. In security area, holding of second Japan-India 2+2 meeting last September, and implementing Japan-India joint fighter exercise for the very first time in January this year were welcomed as concrete progress. Now, economic cooperation with India, which continues to grow rapidly, will not only support further development of India, but also creates significant economic opportunities for Japan. In this regard, we welcome that steady progress is being made towards realizing 5 trillion yen of public and private investment and financing from Japan to India in 5 years, the target which Prime Minister Modi and I set in March last year. And we welcome the signing of the aid memoir to confirm our intention. हम जो एड मेमोर पे अभी हाल ही में एक्सटेंशन हुआ है उसका भी हम स्वागत करते हैं और हमने इस बात पर दोबारा से पुष्टि करी कि हम ऊर्जा और डिकार्बनाइजेशन पर अपने सहयोग को पर काम करते रहेंगे
जो हाल ही में एक 300 बिलियन येन का लोन एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। इससे हमारा सहयोग और भी बढ़ेगा और हम भारत में कनेक्टिविटी को और भी बढ़ाने के लिए खास तौर पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में का लोन एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। इससे हमारा सहयोग और भी बढ़ेगा और हम भारत में कनेक्टिविटी को और भी बढ़ाने के लिए खास तौर पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हम Fiscal 2023 will be the year of Japan-India tourism exchange to promote our exchanges through tourism. I also welcome the renewal of our MOC on Japanese language education. During our working lunch to follow, I hope to have yet another productive discussion on such topics as the Indo-Pacific regional situations. After our working lunch, I will announce my new plan on Free and Open Indo-Pacific, or FOIP, at a lecture event hosted by the ICWA. It gives me a great pleasure to be able to unveil my new vision on the soil of India, which is our indispensable partner in realizing FOIP. I am looking forward to welcoming Prime Minister Modi in Hiroshima in May, and to once again visiting India on the occasion of G20 New Delhi Summit. I thank you. Thank you, Excellency. That concludes the press statements. Thank you all for joining. All right. There we heard Japanese Prime Minister Fumio Kishida speaking as he arrives in Delhi, exploring several ways to boost bilateral ties between India and Japan. The areas range from defense, security, trade and investment, and technology as well. We heard Prime Minister Modi as well assuring that bilateral ties between Japan and India have never been better than before. In their talks, they've extensively touched upon areas of defense, on security, on trade and investment and technology as well. In fact, Japanese Prime Minister there speaking on the stage right beside Prime Minister Modi and assuring great working partnership between India and Japan.